Hello, children. Good morning to all, and welcome in GK class of KG2. Children, after long time, I am again with you all with many more interesting things to share in GK. Okay, so now, children, today I am going to tell you about rainbow. Uh, have you seen rainbow? I think you all must have seen rainbow. Yes or no? यस ना? देखा है ना सभी ने रेनबो? उम्मीद है कि सबने देखा होगा बारिश के सीजन में, है ना? इन रेनी सीजन मोस्टली यू सी द रेनबो इन स्काई, इजंट इट? आसमान में बारिश के मौसम में रेनी सीजन में क्या दिखता है? जब एकदम आसमान बारिश के बाद क्लियर हो जाता है, स्काई साफ एकदम ब्लू स्काई दिखता है और सन पूरा शाइन करता है, तो क्या होता है? तब रेनबो दिखता है ना? तो and you must have noticed that always uh, rainbow in a rainbow there are 7 colors. You always see 7 colors in a rainbow. रेनबो में अक्सर अधिक मतलब कि रेनबो में हमेशा 7 कलर्स दिखते हैं. इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान दिया होगा. you must have noticed it that there are 7 colors which you can see in a rainbow. Isn't that now rainbow is always seen in 7 colors, and do you know the name of those 7 colors? Huh? Let me tell you. Those 7 colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. You can see this picture of a rainbow. Here also you can see the colors of a rainbow. ओके, यहाँ पे जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसमें भी आपको रेनबो के कलर्स दिख रहे होंगे. एंड यू ऑल मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ रेनबो. एंड rainbow, so if anybody asks you that what is a rainbow, then you can say that it is a set of 7 colors band which is seen in the sky when there are water droplets in the air and the sunlight is shining. है ना? रेनबो क्या होता है? रेनबो 7 कलर्स का एक बैंड होता है, एक सेट ऑफ 7 कलर्स होता है, जो कब दिखता है? जब क्या कहते हैं, आसमान में सन पूरी तरह से शाइन करता है और वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब बूंदें होती हैं, नमी होती है बारिश की, तो उस समय रेनबो दिखाई देता है. ओके, now I hope you all have understood what I want to tell you about rainbow. And one more interesting thing about a rainbow is that it is seen in semicircle. उसका शेप क्या होता है? What is the shape of a rainbow? It is seen, you can see it in a semicircle form. But do you know, children, that actually in real rainbow is in a circle form? But because you stand on earth, आप ज़मीन पे खड़े होते हैं, इसलिए आपको वो सेमी सर्कल फॉर्म में दिखाई देता है. लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? इट इज़ इन अ सर्कल फॉर्म. ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है ना? इट इज़ इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट रेनबो ना. तो आई होप यू ऑल हैव understood about rainbow,
And now let us try to learn some questions based on this topic. Okay, so let us start. Let me show you some, first of all let me show you some pictures, then we will learn the question answers. See this picture of rainbow. Okay, see the colors. See, it is mostly it is in circle form, but because you stand on the earth, so it looks like a semicircle. See, this is a full view of a rainbow in circle form. Clear? Now let us read some question answers which are based on this topic which I have explained today, that is rainbow. Okay, let's start. You will repeat the answer after me so that you can know the correct pronunciation of each word. Okay, so question number 1 is, what is a rainbow? Question number 1 is, what is a rainbow? रेनबो क्या होता है? तो you will say the answer. Repeat after me. Rainbow is a spectrum of light seen in the sky. Okay, again repeat. I am repeating it. Rainbow is a spectrum of light seen in the sky. Spectrum means होता है band. Spectrum of light means a band of light, मतलब colors का band होता है. तो this is question number 1. Now the next question is, how does a rainbow look like? Means इसका मतलब क्या हुआ कि रेनबो कैसा दिखता है, मतलब किस तरह से दिखाई देता है. तो यू विल गिव द आंसर. रेनबो लुक्स लाइक अ semicircle. Again I am repeating, rainbow looks like a semicircle. Okay, कैसा दिखता है? semicircle की तरह दिखता है. और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बट हाउ डज इट लुक्स इन रियल, एक्चुअली हाउ डज अ रेनबो लुक लाइक, देन यू विल से एक्चुअली इन रियलिटी रेनबो इज इन सर्कल फॉर्म. ओके, लेकिन वो इट लुक्स लाइक अ सेमी सर्कल. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो? मीन्स कितने कलर्स होते हैं रेनबो में. You have to tell the name of colors. So you will give the answer. There are 7 colors in a rainbow. Again repeat it after me. There are 7 colors in a rainbow. Okay children, now the next question is, name the colors that you can see in a rainbow. मीन्स कि आपको कलर्स के नाम बताने हैं जो आप रेनबो में देख सकते हैं. तो यू विल गिव द आंसर. रिपीट आफ्टर मी. वी कैन सी रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो and violet colors in a rainbow. Okay, again I will repeat it. We can see red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet colors in a rainbow. Okay children, these are the questions, 4 questions which you have to learn with correct pronunciation. Okay, and let me tell you one thing, that for learning the colors of a rainbow, you can learn one word, that is Vibgyor. VIBGYORE. VIBGYORE.
Gyor. V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, and red, R for red. So if you learn this word Vibgyor, so you can learn the colors easily, all the colors of a rainbow in easy way. Okay children, so today's assignment is you have to learn these 4 question answers with correct pronunciation orally. Is it clear to everybody? So we will meet in the next video with new questions. Till then, bye, take care.